with this chapter, Newton's first law of motion and inertia. This is the most, क्या बोलते हैं, पूरा दुनिया इस पे चलता है. If you remember, मैंने आप लोग को inertia explain किया था. Can anyone tell me what is inertia in very layman language? मतलब जैसे हम बात करें, not in physical language, मतलब physics के इसमें नहीं बोलो. Can anyone tell me what is inertia? Okay, so inertia, if you remember, जब भी किसी ने तुम्हें inertia word बोला ना, so always remember that inertia is like laziness. Okay, so if it's there in one state, एक कोई तो state पे है, सोचो मैं एक जगह पे बैठी हूँ, तो हर एक बॉडी में एक inertia रहता है. जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, it will not move. So inertia is like remaining in the same state for a long time. मतलब laziness. जैसे तुम अभी एक जगह पे बैठे हो, तो तुम एक ही जगह पे बैठे हो. ओके, जब तक कोई फोर्स, जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं चिल्लाएगी, तब तक तुम उठोगे नहीं उस जगह से. तो दैट इज इनर्शिया. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल रिलेटेड टू इनर्शिया. तो वो क्या बोलता है, आई एम नॉट एक्चुअली रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, इट्स नॉट नीडेड. ओके, ये देखो, द फर्स्ट थिंग, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, it remains at rest unless a force is applied on it. Okay, if a body is moving, it will continue to move with the same speed in the same direction unless a force is applied on it. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, अभी क्वेश्चन आंसर्स में एक क्वेश्चन आ गया था अभी, that a body is moving on a table, suddenly it gets stopped. तो क्यों होता है स्टॉप? बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड. तो फ्रिक्शन ने बॉडी का मूवमेंट को रोक दिया. ओके, सो दैट्स कॉल्ड इनर्शिया. सो इनर्शिया क्या बोलता है, बॉडी विल ट्राई टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड. इफ अ बॉडी इज मूविंग, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्पीकिंग अबाउट दिस. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, द लिखा है स्टेटमेंट, if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest, and if it is in the state of motion, it will remain moving in the same direction with the same speed unless an external force is applied. I hope you understood. Now what is inertia? Yes, ma'am. Don't forget this, okay? kabhi bhulo mat isko. But inertia is a property of an object. We were talking about Newton's first law of motion. So what is inertia? So it is the property of an object by virtue of which it neither changes its state nor it tends to change the state, nor it tends to change क्या, okay, neither changes its state nor it tends to change the state. Okay, so it is the inherent property of each object. तो याद रखना, any living or non-living object in earth, it has this inertia property. एक characteristic है. जैसे हर एक इंसान में एक लेजीनेस होता है, तो दैट्स व्हाई व्हेन वी से रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, इनर्शिया है तुम्हारे में बहुत. तो बेसिकली वी आर टॉकिंग कि तुम बहुत लेजी हो, खत्म बात. तो लाइक यू नो, इनर्शिया एक बोलते हैं. सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ इनर्शिया? स्पॉन्टेनियस, है ना, कि तुम बहुत स्पॉन्टेनियस हो, दैट यू डोंट रिक्वायर, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हो, यू डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स. Okay, so now this is very important. Newton's first law is first time talking about an external force applied. मतलब अभी तक हमने जो भी फोर्स पढ़ा, तो न्यूटन ने पहली बार बोला कि आपको कुछ चेंज करना है, स्टेट ऑफ रेस्ट या चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यू नीड टू अप्लाई एन फोर्स. तो पहली बार उन्होंने बात किया फोर्स के बारे में. ओके, तो फोर्स के बारे में क्या बोला? द फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज which can move the stationary object or can change the state of motion of a moving object. Change the state मतलब वो चल रहा है तो बंद कर दो, या you can change the direction of the body, वो भी एक change हुआ ना. ठीक है, I hope you understood this. Now, so force is what? It is the external cause, okay, which tends to change the state of rest or state of motion.
Now force is a vector quantity. We have studied about scalar and vector. What is vector quantity? It is that physical quantity which is talking about magnitude and direction. देखो अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा था फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या था? ऑपोजिट डायरेक्शन में था. तो यस, डायरेक्शन मैटर्स इन केस ऑफ फोर्स. तो इसलिए इसको फोर्स को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. तो सम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इज जीरो. ओके, तो सोचो कोई बॉडी है, उसको आगे जाना है और फ्रिक्शन भी इतना ज्यादा है कि उसको आगे मूव होने नहीं देता है. व्हाट विल हैपन टू दैट बॉडी? इट विल रिमेन इन दैट सेम स्टेट. सोचो, द फोर्स अप्लाइड, गेटिंग अप्लाइड ऑन दैट बॉडी एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज सेम, दोनों सेम सेम हुआ, तो क्या हो जाएगा? दे विल कैंसल ईच अदर एंड द बॉडी विल नॉट मूव. तो जब जीरो हो जाता है तो बॉडी इज एक्चुअली नॉट मूविंग. ठीक है, तो व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग, ऐसे सोचो कि देयर आर सेवरल फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द रिजल्टेंट नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर रहा. ओके, नाउ एक बात बोलो, जिसका मास बहुत ज्यादा हो, देखो यहाँ पे, the greater the mass, the greater is the inertia of the body. Like for example, एक ट्रक खड़ी है और एक बाइसिकल खड़ी है, तो ट्रक को तुमने धक्का मारा, ट्रक हिलेगा क्या? Now your force and the frictional force which truck is applying on you, frictional force ज्यादा है और तुम धक्का मार रहे हो वो कम है, तो greater the mass, greater is the inertia, वो नहीं हिलेगा. What about cycle? It is lighter body, lighter mass, तो inertia will be less. तो तुमने थोड़ा भी धक्का मारा तो बाइसिकल विल स्टार्ट मूविंग. ओके, अ क्रिकेट बॉल इज मोर मैसिव देन टेनिस बॉल. तो क्रिकेट बॉल acquires much smaller velocity than a tennis ball when the two balls are pushed with equal force for the same duration. In this case, when they are moving with the same velocity, it is more difficult to stop the cricket ball in comparison to tennis ball. If you must have heard कि क्रिकेट बॉल हाथ में बहुत जोर से लगता है. व्हेन यू ट्राई टू स्टॉप द बॉल, ओके, इट रियली, मतलब तुमको लग सकता है वो, बिकॉज इट इज हैविंग लिटिल, मतलब हैवी मास है उसको. ओके, इट इज डिफिकल्ट टू सेट अ लोडेड ट्रॉली इन मोशन. एक ट्रॉली, खाली ट्रॉली है और एक लोडेड ट्रॉली है, तो लोडेड ट्रॉली को धक्का मारने को ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा फोर्स लगता है. सिमिलरली इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप द लोडेड ट्रॉली. Okay, so we are going to talk about the inertia of rest and inertia of motion tomorrow. Okay, also let me know what can be the timing. Okay, if there is timing tomorrow, matlab any other timing other than 1 o'clock, you let me know. Okay.